Hello students, welcome to this math session. In this session, we will talk about next topic of number system, and that is converting recurring decimals into p by q form. आइए उससे पहले रिकॉल करते हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था, and that is नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पर क्लासिफाई करना. क्या आपको याद है बच्चों कि डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पर नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, that is टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. आइए इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर, that is 3.9. So here you can see students that the decimal expansion does not continue, it has ended. So this is a terminating number. But non terminating numbers कौन से होते हैं? जिनका decimal expansion end नहीं होता, चलता रहता है. Now again ये भी दो टाइप के होते हैं, रिकरिंग नंबर्स एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स. रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल 3.555 एंड गोइंग ऑन लाइक दिस. तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो डिजिट है 5, ये एंड नहीं होता, ये रिपीट होता रहता है. सो दीज आर रिपीटिंग नंबर्स और रिकरिंग नंबर्स. बट ऐसे नंबर्स जो रिपीट भी नहीं होते और एंड भी नहीं होते, वो होते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स, जिसके लिए हमने आपको एग्जांपल्स बताए थे √2, √3 एटसेट्रा. बट हमने आपको बताया था दैट दीज नंबर्स, रिकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. बट इफ दीज आर रैशनल नंबर्स तो इनका एक p by q फॉर्म होना चाहिए. यस, बिकॉज रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p by q फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल होना चाहिए. That is exactly what we will learn in this session. So let's take an example and understand how to convert them into p by q form. तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. पहला एग्जांपल है 0.3 बार, that is 0.3333 and so on. और इस नंबर को हमें p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले जिस नंबर को आपको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे आप x के इक्वल लिख लीजिए. X equals to 0.3333 and so on, and consider this as equation 1. Now carefully observe कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है या कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. तो आप देख सकते हो केवल एक ही डिजिट, that is 3, वो रिपीट हो रहा है. तो जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है then we multiply by 10 both sides in the equation. अगर दो डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता we would multiply by 100 both sides. सिमिलरली अगर 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता वी वुड मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स. बट यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, सो वी वुड मल्टीप्लाई बाय ओनली 10 बोथ साइड्स. सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 10. वी गेट 10 टाइम्स x इक्वल्स टू 10 टाइम्स 0.3333 एंड सो ऑन. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट 10x on the left side, and here when you multiply by 10, this decimal will move one step to the right. So you get 3.3333 and so on. Consider this as equation 2. Now, if you subtract these equation 1 and equation 2, तो left part में से आप left part minus कर दीजिए and from right part you subtract right part. You get 10x minus x or 1x. You can say 1x as well. And you subtract this from this, 3.3 bar minus 0.3 bar. Clearly you get 9x equals to 3. If you take 9 to the other side, you convert it into p by q form, that is 3 by 9. अगर आप इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो you will get 1 by 3. You can see that this number has been converted into p by q form, that is 3 by 9 or 1 by 3. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. This example is 1.567 bar. So let's put it equal to x. X equals to 1.567 and so on. And this is equation 1. Clearly you can see here that a block of 3 digits is repeating.
यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो वी वुड मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स. सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 1000. 1000 टाइम्स x इक्वल्स टू 1000 टाइम्स 1.567 and so on. So when you multiply by 1000, you get 1000x in the left side, and here this decimal will move 3 steps to the right. You will get 1567.567 and so on. This is equation 2. Now on subtracting equation 1 from equation 2, you get equation 2 minus equation 1, 1000x minus x, subtracting these two equations, 1000x minus x, so you can say 1x, and here you get 1567.567 bar, this minus 1.567 bar. Now when you subtract, you get 999x equals to 1566. देखा, डेसिमल एक्सपेंशन गायब हो गया, eliminated. So now you get x equals to 1566 divided by 999, which is a p by q form of this number. आप चाहो तो इसे कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में एक एडिशनल स्टेप भी करना पड़ेगा बच्चों. व्हाट इज दैट? लेट्स अंडरस्टैंड. ये एग्जांपल है 1.567 बार, कुछ पहले ही जैसा है, बट यहां पर रिपीटिंग डिजिट केवल एक है, एंड दैट इज 7. अब इसे कैसे करेंगे? पहला स्टेप, पुट इट इक्वल टू x. 1.567 bar. This is equation 1. Now, additional step क्या है कि अगर आपके नंबर में ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं आफ्टर द डेसिमल, जो ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम है टू ब्रिंग दिस डेसिमल क्लोज टू द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी उसके जस्ट लेफ्ट में लेकर आना है आपको. उसके लिए what you have to do, you have to move it to 2 steps to the right. So we have to multiply by 100 first so that this decimal reaches to this place. तो ये additional step आपको previous 2 questions में नहीं करना पड़ा, but यहाँ करना पड़ेगा. So let's multiply by 100 both sides. 100 times x equals to 100 times 1.567 bar. So when you multiply, what will you get? You will get 100x equals to, this will move 2 steps to the right, 156.7 bar. This is equation 2. Now this was an additional step. अब same step करना पड़ेगा which we did in the previous 2 questions. ध्यान से देखो कितने digits repeat हो रहे हैं. Only one digit, that is 7. So we have to multiply by 10 both sides in this equation. Let's do it. 10 times 100x equals to 10 times this number, 10 times 156.7 bar. When you multiply, you get 1000x, yes, and here when you multiply by 10, this will move 1 step to the right, you will get 1567.7 bar, because 7 तो end नहीं हो रहे ना, बहुत सारे 7 है. So this is equation 3. Now students, you will not subtract equation 1. हम उन equations को subtract करेंगे जिनके decimal के बाद repeating block है. So here you can see decimal के बाद 7 is repeating, here also 7 is repeating. So these two will be subtracted. Subtracting equation 3 minus equation 2. जब आप इन्हें subtract करेंगे, let's quickly write what we will get. 1000x minus 100x. What you will get? Let's write here. You will get 900x equals to
If you subtract these, 7 bar cancel. 1567 minus 156. 1567 minus 156. So what you will get here? 900x equals to, you will get how much? 1411. When 900 will go to the right side, you will get 1411 divided by 900, which is your P by Q form. Have you subtracted correctly? I hope so. So this is another example. अब एक last example और करेंगे so that we are sure कि हमें इन numbers को P by Q form में कैसे convert करना है. Let's take one last example and that is 1.567 bar. यहाँ पर कितने digits repeat हो रहे हैं? 2 digits. But also you can see there is one digit जो repeat नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर भी आपको additional step करना पड़ेगा. Let's do this quickly. First step, put it equal to x. Equation number 1. Now, one digit does not repeat after decimal 5. So this decimal needs to brought here. इसको आपको यहाँ लेकर आना है. So we will multiply by 10 both sides. 10x equals to, when you multiply by 10, you will get 15.67 bar. Simply I have just multiplied by 10 in this equation. What I have done, I have multiplied by 10 in this equation. I got equation number 2. Now let's see how many digits are repeating in this block. 2 digits. So we will multiply by 100 in this equation. So 100 times 10x equals to 100 times 15.67 bar. What you will get? 1000x equals to 1567.67 are unlimited. So 67 bar. This is equation 3. Simply, just like previous question, subtracting equation 2 and 3. Equation 3 minus equation 2. You get 1000x minus 10x, that will give you 990x equals to, if you subtract them, 67 bar will cancel out. 1567 minus 15, that will give you 1552. So finally you get your P by Q form 1552 upon 990, जिसको आप कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, which I leave on to you. Now, आपने 4 क्वेश्चंस किए and I am sure now you understand how we can convert these recurring decimals into P by Q form. तो अब मैं आपको एक होम टास्क दे रहा हूं and these are the 2 questions that you will be doing to convert into P by Q form, and we will meet in the next session with another topic. Till then, keep learning and take care.